ओके, एक्शन की बटन के साथ नमस्ते। और करण और काला कौवा आज इकट्ठे बैठ के कोशिश करेंगे कुछ करने के लिए। दिल्ली में जाड़ों का मौसम है, लेकिन अगर आप टीवी चैनल्स ऑन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जाटों का मौसम है, क्योंकि न्यूज़पेपर उठाओ तो भी जाटों की खबर है, और अगर न्यूज़ चैनल्स ऑन करो तो आपको सिर्फ जाटों के बारे में बात होती दिखाई देगी। बेसिकली काला कौवा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करो, बात पॉलिटिक्स की ही होने वाली है। और इसीलिए आज मैं और सुदीप, मेरे अच्छे मित्र, आए हैं आपके सामने एक सीरीज लेकर, जो कि इलेक्शन कवरेज के ऊपर आधारित रहेगी। The idea is to come and talk about what's happening, which is our view around elections, and there are going to be a series of elections coming up. We will try our best to give you our side of the story, sometimes biased, sometimes unbiased, but we will try and do our best to be. So उससे पहले we move forward with that. So Karan's inclination more is towards the geostrategic knowledge around the country, how India is challenged by its neighbors, or for that matter, how China is gearing up in the new world, and we've seen lots of examples of that. And Karan has somehow been able to get a futuristic view of many of the happenings in China, which are unfolding in front of us today, which he's been able to see something like 2 years back. So it's interesting how we can, over the days or the weeks ahead, be able to connect the world politics, the world geostrategic situations with what is happening in India. Exactly. And especially because the elections that we have to speak about are UP elections, which is supposed to be the gateway to India. Gateway to India, no, absolutely. And I think we came on this idea that Major Sudeep, with his background in the armed forces and his deep understanding of history, and my own time that I'm spending on researching what's happening within the nation, we just thought it would be a good opportunity for us to come together and bring to the audiences parts of our research, parts of our study, and parts of our insight. So with that background, UP का एक stat है जो कि मैं बहुत यूज करता हूँ. It is the 5th largest nation by population. अगर आप पूरी श्रृंखला ऐड करो, it's bigger than Brazil actually. 22 करोड़ की पॉपुलेशन का मतलब 5वां सबसे बड़ा देश है. That's correct. So in fact you can join an entire continent and put them into UP, just by the population stats. So Sudeep, आप और मैं, we've discussed this multiple times on UP, and I'll start with you first. क्या लग रहा है, क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी जी एक तरफ, समाजवादी, और कांग्रेस है ही नहीं शायद. तो थोड़ा सा let's start with the big picture. आप start करिए, and then I will give my side of the story. So I'll just pick up from exactly where you left. तो एक प्लेयर कांग्रेस शायद इस इलेक्शन में से बिल्कुल गायब है, बट देन एक लॉयल वोट है कांग्रेस का जो हमेशा उनके पास ही जाता रहा है, और इस बार भी उनके पास ही जाएगा, चाहे कम होके जाए, बट उसका एक हमेशा की तरह उसका एक इम्पैक्ट पूरे इलेक्शन के जो वोट्स हैं, जो टोटल वोट्स हैं, उस पर हमेशा रहता है. और दूसरा वोट एक है जो बहुजन समाज पार्टी का है, जो इस बार कम दिखाई देती है मेरे ख्याल से. इफ यू जस्ट सी इट इन अ स्लाइट बिट ऑफ अ डिफरेंट लाइट, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो, दे हैव ट्राइड टू मेक इट एन इलेक्शन ओनली बिटवीन 2 पार्टीज. एंड इसकी पहल जो थी वो बाकी पार्टीज ने नहीं की थी, वो बीजेपी ने की थी. अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी का एक भाषण था जो इलेक्शंस अनाउंस होने से जस्ट पहले हुआ था, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि इस बार सिर्फ एक पार्टी के साथ हम लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी है. अच्छा. Which has never happened. Because it's always been at least 3 people, or at least 3 parties. Yes, not 4. It is always with 4 parties at least. And why it works to the advantage of everybody else is because ये parties कम से कम आपके मेन ऑपोजिशन की वोट्स काटती हैं जहाँ पे भी आप हैं. जैसे बहुजन समाज पार्टी है, इनका एक बिल्कुल फिक्स वोट है, जो जाटव वोट है, वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, it doesn't matter whether मायावती is going to win the elections or she's going to walk away with 4 seats, 4 सीट लेके जाए, 5 सीट लेके जाए, 40 लेके जाए, चाहे 100 से ऊपर लेके जाए, लेकिन जो जाटव वोट है, which is a big chunk, substantial chunk of the scheduled caste votes, that will always and always go to Major Sudeep.